Welcome my dear friends. Now in this session we are going to solve our 2019 question. Okay, our 2019 question को हम solve करने वाले हैं and this will be our first question. 2019 में टोटल दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस सेशन में हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Here your question is what? You consider an ideal vapor compression refrigeration cycle. So first of all you have to consider an ideal VCRS system, that means vapor compression refrigeration system. Okay, if the throttling process is replaced by an if the throttling if the throttling if the throttling process if the throttling process is replaced by an is replaced is replaced by an is replaced by an isentropic expansion process isentropic isentropic expansion process isentropic expansion process. Okay, keeping all the other process unchanged, keeping all the other all the other all the other process unchanged. Which one of the following here which one of the following which one of the following which one of the following statement is true statement statement is true statement is true for the modified cycle. Okay, for the modified cycle, is it? This will be your question, and for that question your correct option here, total 4 option is given, A B C D in form, and you have to choose your correct option for that question. So your A option is coefficient of performance, that means COP is lower than is lower than that of the original cycle of the original cycle. ये है फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन आपका क्या है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, दैट मींस RE, here your RE is lower than is lower than that of the original cycle and your third is coefficient of performance is higher than coefficient of performance is higher than that of the original cycle. Okay, of the original cycle. And fourth option is nothing but your coefficient of performance is same. Coefficient of performance is same. Okay, same as that of the original cycle. So this is your question, and for that question you have to solve. Okay, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो एनालिसिस करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपको गिवन है. अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय एन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, इसका मतलब क्या कि अगर आप थ्रॉटलिंग प्रोसेस, दिस विल बी योर थ्रॉटलिंग प्रोसेस. ओके, दिस विल बी योर थ्रॉटलिंग प्रोसेस. इस तरीके से साइकिल आपका रिवर्स में फ्लो होता है फ्रॉम पॉइंट थर्ड टू फोर्थ. तो अगर ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, एक्सपेंशन प्रोसेस है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस में आप क्या करोगे, टरबाइन को इंस्टॉल करोगे. इस तरीके से टरबाइन को इंस्टॉल करोगे. दिस विल बी योर टरबाइन एंड दिस विल बी योर थर्ड पॉइंट एंड दिस विल बी योर व्हाट, फोर्थ पॉइंट. ओके, अगर इस चीज को, इस थ्रॉटलिंग डिवाइस को
अगर चेंज कर दिया टरबाइन से, ओके, एंड कीपिंग ऑल द अदर प्रोसेस अनचेंज्ड, दैट मीन्स इसके बाद आपका सेम इवापोरेटर होगा, उसके बाद सेम आपका कंप्रेसर होगा एंड सेम आपका कंडेंसर होगा। सारे प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सारे प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बट थ्रॉटलिंग प्रोसेस की जगह पे आपने क्या इंस्टॉल कर दिया है, आपने इंस्टॉल कर दिया है टरबाइन को। अगर ऐसा आपने कर दिया, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। सो फॉर दैट question, your correct statement is this, your C option. What is your C option? The coefficient is higher than that the coefficient of performance is higher than that the original cycle. Original cycle से ये आपका original cycle है, by the using of throttle valve you have to make your original cycle. Okay, so this will be your original cycle. तो original cycle से COP ज्यादा हो जाएगा अगर आप टरबाइन throttle valve की जगह पे लगा देते हो तो। इज इट ऑल राइट? अब देखो कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज दैट ये ओरिजिनल साइकिल के लिए अगर आप टीएस कर्व ड्रॉ करते हो, ओरिजिनल साइकिल के लिए अगर आप टीएस कर्व ड्रॉ करते हो और यहाँ पे आप एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए अगर कर्व आप ड्रॉ करते हो, दिस विल बी योर सैचुरेशन कर्व, दिस विल बी योर सैचुरेशन कर्व एंड हियर आल्सो दिस विल बी योर सैचुरेशन कर्व। ओके, सो अगर थ्रॉटल वॉल्व के लिए अगर आप प्रोसेस देखते हो तो आपका प्रोसेस हाईली इरिवर्सिबल जाता है। इज इट ऑल राइट और नॉट? आपका थ्रॉटल वॉल्व के लिए अगर देखते हो तो आपका प्रोसेस हाईली इरिवर्सिबल जाता है, ये दैट विल बी योर थर्ड टू फोर्थ प्रोसेस। बट अगर आप एक्सपेंशन वॉल्व के लिए देखते हो तो आपका प्रोसेस बिल्कुल ही स्ट्रेट जाएगा। क्यों स्ट्रेट जाएगा? बिकॉज दिस expansion process is nothing but your isentropic process, okay, and this is your entropy scale and this is your temperature scale, okay। तो आपका जो टरबाइन का प्रोसेस होता है वो हाईली आइसेंट्रोपिक एंड रिवर्सिबल इन नेचर होता है। दैट मीन्स फॉर दैट योर S3 is just equal to S4 and here for that your S3 is not equal to S4, okay ना, S3 is not equal to S4। That means for that process your refrigeration capacity, refrigeration effect gonna be increase। देखो यहाँ पे ये बड़ी लाइन आ रही है, यहाँ पे ये बड़ी लाइन पिक्चर में आ रही है, बट यहाँ पे छोटू लाइन पिक्चर में आ रही है। यहाँ पे अगर COP फॉर द ओरिजिनल साइकिल अगर आप देखोगे तो अगर इसको लिखते हो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट अगर आप लिखते हो एंड COP फॉर योर टरबाइन के लिए अगर लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, refrigeration effect upon work input, and for all the cycles same this refrigeration effect is gonna be changed। this will be your refrigeration effect first and this will be your refrigeration effect second। so your refrigeration effect second gonna be greater than your refrigeration effect first। तो अगर ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सेकंड अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या, COP आपकी ज्यादा होगी, दैट मींस COP विल बी हायर। okay, COP will be higher। so for that question your correct option is nothing but your C option is correct। so your correct option is what? Your correct option is C option, and by this way we have to analyze our question and we have to solve our question, okay। so my dear friends, in next session we are going to solve our 2019 सेकंड क्वेश्चन। 2019 में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने अभी अभी फर्स्ट इस सेशन में अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड नाउ इन नेक्स्ट session we are going to solve our 2019 second question for gate examination, okay। so all the best for your examination, have a nice day and thank you।